A. Hello. His nickname is A. तो ये हॉस्टल में मिले थे मुझे, उनके साथ ही जा रहा हूँ। तो आज का वेदर इज नॉट गुड राइट। आज का वेदर बहुत खतरनाक है, पूरी बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं। सी सॉल्ट यू कैन सी। Before I work here for sunbed and MATHURA. So guys, this is Kalim Beach. Kalim Beach, right? Kalim Beach. Dirty beach. Dirty beach, yeah. So much of trash is there, right? Come from, the wave beach. But people do not have to, throw all these things in the beach. That is very bad. People throwing trash in the beach, Sorry. Sorry, and Thai people same. You see, in the morning I come have, and now same. No people first. Oh, very bad, very bad. मतलब बहुत बेकार है ये, देखो पूरी बोतलें बिकी हुई हैं। 19 minutes before 18 minutes. I don't like this. It's annoying. Yeah. Annoying, really. Very bad. We can go. I can go there. Yeah. Possible? No problem. Okay. So one thing which is very good in Thailand is people never say no. In Thailand, people never say no. For everything, say yes. Guys, it's raining, heavily raining, but हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा ये देखिए, यहाँ पे कचरा फैला रखा है लोगों ने, बोटल्स, तो ये सब हम साफ़ करने में लगे हुए हैं। मैं और मेरे फ्रेंड जो हैं ए, जो हमें हॉस्टल में मिले थे, वी आर डूइंग गुड थिंग। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। कभी मत करो यार ऐसा, इतना अच्छा समुद्र है, उसको तुम गंदा कर रहे हो। Don't do, please, it's annoying. I can find more. Yeah, here. Shameful, very shameful. Never do. क्या कर रहे हो यार ये लोग? Oh, inside the dustbin. Direct. Yeah, see. तो गाइस, साफ सफाई के बाद एक नारियल मिला था मुझे, मैंने उसको तोड़ के ये हाल किया है, पूरा निकाल दिया है। तो मैं नारियल ट्राई कर रहा हूँ। मट्टी थी थोड़ी। अमेजिंग। That moment I didn't water come. ओके। नारियल तो बहुत खाए मगर इस तरीके से नहीं खाए, पड़ा हुआ था नीचे तो तोड़ा खूब, वो इसके हिस्से पड़े, तोड़ा, पानी पिया उसका। Then now I'm having this. बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा।
क्लीनिंग एंड मस्ती ऑफ बीच। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। विच प्लेस वी आर गोइंग? Banzaan Market. बाज़ार मार्केट। ओके, बाज़ार मार्केट जा रहे हैं। We have to stop. ओके शिप। देखो भाई यहाँ पे रुकवाया है एक के लिए। Maybe manager. ओह दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। भाई इंडिया में भी ऐसा करो, एक लड़की के लिए देखो पूरी रोड रुकवा दी इन लोगों ने। दिस इज व्हाट अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। Hotel. सुबह मैं भी हूँ बाज़ार मार्केट में, दिखाता हूँ ये बाज़ार मार्केट में क्या है। Let's show you. Smell is pathetic. Let's see seafood. Lobster. Oh crap. This is Banzaan Seafood Market. गाइस ये बाज़ार मार्केट में मैं एक चीज़ खा रहा हूँ। दिस इज आई डोंट नो द नेम, पैनकेक है, चिकन का चिकन पैनकेक विद चीज़। तो ये मैम बना रही है अभी। Pancake with shredded chicken. I don't know what is shredded chicken. I'll Google it later on. अच्छा लग रहा है। इसमें जो चीज़ पड़ा ना, तो ये यहाँ पे एक चीज़ है, सब में मीठा कुछ लगा देता है, मीठा लगा देता है। Namaste. तो गाइस जो नीचे मैंने मार्केट दिखाई थी आपको, वहाँ से सी फूड खरीद के आप लाके यहाँ बना सकते हो। So we have to buy from downstairs and here to give you cook. Oh, okay. 你好，帅哥，看一下我家帅哥。 Thank you. 这里 Thank you. ये मार्केट है पूरा। देखो जैसे ये लोग लेके आए हैं, इन्होंने दिया इनको। गाइस मैं डूरियन ट्राई करने जा रहा हूँ आज। सबसे वियर्ड फूड है कि बदबू खतरनाक है इसकी। पहली बार मैं आज ट्राई करता हूँ डूरियन। सो लेट्स गो अहेड एंड हैव डूरियन। There's so many foods inside, you know. डूरियन मैंने वहाँ देखा था साइड में। Durian, durian, durian. Where is durian? I've seen somewhere. कहाँ लगा था मैंने? यहाँ लगा था शायद। Durian, durian, durian. Then give me this that one. 150 baht.
Can I eat here? Eat here? Okay. Can you open it? No, ऊपर बुलाओ. तो ये 150 बात का अलग दूरिन मिला है, दैट इज लगभग 300 रुपये करीब. Is there any seat? ये तो खा ही जाऊँगा मैं. जिस मार्केट की मैं बात कर रहा था, बाज़ार मार्केट बाहर में, जहाँ पे हम लोग खाना सस्ते में खा सकते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का है. देखिए यहाँ पे पूरे साथ में लगते हैं पूरा मार्केट में इस तरीके से. और मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ उसमें. बहुत यूज़ है जेली मिल्क स्मूदी. ये मैंने पी थी ऊपर मलेशिया में. तो ये मार्केट है बाज़ार सुपर मार्केट के बाहर में ही है. नॉट सुपर मार्केट, सिंपल मार्केट तो बाहर में ही है. यहाँ पे आप साइड ट्राई कर सकते हो. ये इधर तो पूरा सी फूड सेक्शन है. ये डोनट्स. कूल. beef. See what is this? Hello guys, 10 day in Thailand and 3rd day in Phuket. तो फुकेट से अभी मैं जा रहा हूँ आज एयरपोर्ट. मेरे बैंकॉक की फ़्लाइट है. बैंकॉक इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना है और आई होप सिंगापुर वीज़ा मुझे मिल जाएगा यहाँ से. मैंने पूछा था सिंगापुर इमिग्रेशन अथॉरिटी से, पूछा था, मेल करा था. उन्होंने कहा था कि ये प्रोसीजर है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो. तो अभी जा रहा हूँ आज बैंकॉक. कल अप्लाई करने वाला हूँ. बताता हूँ मिला कि नहीं. और गाइस अगर ये फुकेट वाली चीज़ आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. टिल देन, गुड बाय, कीप ट्रैवलिंग.